Hello, am I audible? Hello. हाँ, yes मैम, you're audible. Okay. मैम रिकॉर्डिंग स्टार्टेड. हाँ 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 हाँ। আমি লিখে দিচ্ছি, ওর দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, দেখা ডে যাচ্ছে. 1 চ্যাপ্টার 1 হ্যাঁ, এমকম সেম 3। ঠিক আছে, ঠিক আছে. এটা কোন কোন ইয়ে চ্যাপ্টার? এটা চ্যাপ্টার 1, না না, এটা কোন? এমকম সেম 3 আইএসসিএস। চ্যাপ্টার আচ্ছা, সাবজেক্টের নাম আইএসসিএস। আইএসসিএস. ঠিক, এমকম সেম 3, হ্যাঁ আইএসসিএস, এটা মডিউল 1 চ্যাপ্টার 1। ঠিক আছে. ওকে ওকে, হুম। আমি লিভ করছি ম্যাম. ওকে। So, good morning, students. I heard that all of you are from recording. So, I'll just have to speak by myself. So, let's just start the chapter 1 of module 1. Here, I think you can see the material now. Yes. So, here, we have in all 11 chapters, but sir has scanned and marked the important ones which will come in the examination. So we will focus on that first. Obviously, I will do all the rest chapters as well. मैं कोशिश करूंगी हर एक चैप्टर कंप्लीट करने का. तो चैप्टर 1 की इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट्स. आपको पता है आपका एग्जाम 40 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है आपका मॉड्यूल 1, 20 मार्क्स का होता है मॉड्यूल 2. तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले विद मॉड्यूल 1. Module 1, Chapter 1, where we'll discuss about data and information. Okay. So we can see here, Module 1 students, Chapter 1, chapter's name is Key Information System, Concept System. So first हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें सिलेबस क्या क्या है मैम. फटाफट एक बार देख लेते हैं. ओवरऑल फिर हम लोग समझ में आएगा, हम लोग को हर एक पॉइंट समझ में डिटेल में समझना है. तो स्टार्ट करते हैं विद द सिलेबस. पहला है यहाँ पे कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट का प्रॉपर्टी, टाइप. इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट, उसका क्वालिटी, उसके टाइप्स. इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, लेवल्स. इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट, द बिजनेस एनवायरनमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन. इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन बेस्ड, computer based information system, basically CBI is very very important again. ऑपरेटिंग एलिमेंट्स एंड टाइप्स. तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले, सारी सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ फिर देख पाएगा और अच्छे से आपको. हाउ डू डिफरेंशिएट डेटा फ्रॉम इन्फॉर्मेशन. आप डेटा को इन्फॉर्मेशन से कैसे डिफर कर सकते हो, या फिर कैसे अलग होता है डेटा और कैसे अलग होता है इन्फॉर्मेशन, और दोनों होता ही क्या है. पहला इन द फर्स्ट केस तो पहला होता क्या है दोनों. डेटा इज अ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट. अगर मैं आपको एक ड्राइंग करके चलो बताते हैं फटाफट. अगर आप कहीं रास्ते में देखो, बस एक पैम्फलेट लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है क्लासेस बिगिन टुमारो. ठीक है, तो क्या वो डेटा है? आपको लगता है वो डेटा है? नहीं, वो डेटा नहीं है. वो बस ऐसे आप देख रहे हो, है ना, क्लासेस बिगिन टुमारो, वो डेटा मतलब हाँ, कुछ भी आप जो देख रहे हो उसका रेलेवेंट वैल्यू है या नहीं, वो डेटा है. बट इंफॉर्मेशन कैसे बनेगा? सपोज यू आर सीइंग अ पैम्फलेट, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास पढ़ा क्लास अच्छी पढ़ी. So what we can see here is, first is classes begin from tomorrow. We can see it is written suppose classes begin from today.
which today? First question is it today as in 13/10/23, or this date has already passed, or is it yet to come? We don't know, isn't it? When and what classes, for whom, what classes? All these questions arise in your mind. जब आप ये देखते हो आपके दिमाग में इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा क्लासेस किसके लिए, कौन से क्लास के लिए, या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा, फिर वेन्यू कहाँ पे पढ़ाएगा, कहाँ, फिर फीस स्ट्रक्चर, क्या फीस स्ट्रक्चर है आपका, है ना? तो ये सारे क्वेश्चंस या डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं। तो तब ये जो आपने देखा क्लासेस बिगिन फ्रॉम टुमारो, ये भी इंफॉर्मेशन, मतलब ये भी एक डेटा है। जब मैं इसको ऐसे लिखूंगी, चेंज द कलर ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, अगर आप देखो ISCA M.Com SEM-3 classes begin on 13/10/23 ऑनलाइन मोड, ठीक है? अगर ये आप देख रहे हो, दिस इज इंफॉर्मेशन। Why is this information? Because we can see here, we can understand कौन से सब्जेक्ट के क्लासेस चालू होने वाले हैं, कहाँ होने वाले हैं, अच्छा कहाँ होने वाले हैं, जस्ट राइट, ऑनलाइन मोड ने किसका है, ऑब्वियसली भालोटा क्लासेस, ठीक है? सो ये तो बहुत अच्छा हो गया। When data is registered, when data is understood, when we understand what do we mean by the whole थिंग दैट वी सॉ, जो हम लोग देख के समझ में आए कि इसका मीनिंग क्या है, उससे हम लोग कुछ डिटेल ले पाए जो हम लोग का फर्दर कुछ हेल्प करेगा, कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी जानने के लिए, कुछ भी दिमाग में रखने के लिए। जैसे आपको पता है कि दाल चावल अलग अलग आइटम आपको पता है, वो डेटा है आपके लिए। लेकिन जब दाल चावल से खिचड़ी बनती है ये पता चला आपको, तो द डेटा वेंट टू हाई स्कूल बिकेम इंफॉर्मेशन, है ना? हम लोग जब बच्चे रहते हैं हम लोग को तो पता नहीं होता है हम लोग को सब कुछ, हम लोग बड़े जाते हैं हम लोग को आस्ते आस्ते पता होता है। ऐसा अभी आप लोग M.Com कर रहे हो तो आप लोग काफी बड़े हो गए हो, है ना? तो इन दैट केस आप लोगों को बहुत कुछ पता है। तो इन दैट केस इज इम्पोर्टेंट कि आपको ये पता हो कि जब डेटा होता है वो बस कोई भी चीज जिसे आप देख रहे हो उसे कहते हैं डेटा। बट अगर वो चीज आपके दिमाग में रजिस्टर हो विथ सम प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सब मीनिंग ठहरे, तो उसे कहते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन। So data is raw and unorganized fact that is required to be processed to make it meaningful, and it can be considered as facts, statistics collected together for reference and analysis. तो कौन से keywords है? I'll just underline. Data is raw, unorganized fact. मतलब they are not in an array. They are not in a array. Data is not in a array. एंड ये सो जरूरत क्या है, इसको प्रोसेस करना, मतलब एरे में लाना। क्यों? ताकि उसका मीनिंग बन जाए। कौन से कीवर्ड स्टूडेंट्स? 4 कीवर्ड है यहाँ पे, आप 4 याद रखोगे आपको 2 आउट ऑफ 2 मिलेगा। डेटा रॉ है, अनऑर्गेनाइज्ड है, फैक्ट है। फैक्ट तो ऑब्वियसली क्योंकि वो सच्चाई है, और एक वो मतलब अनऑर्गेनाइज्ड क्योंकि वो एरे में नहीं है। लेकिन आपको अभी क्या करना है, वो डेटा को एरे में लाना है, वो डेटा को एरे में लाना है ताकि वो एक इंफॉर्मेशन बन जाए, ताकि वो एक इंफॉर्मेशन बन जाए एंड उसका अल्टीमेटली एक मीनिंग ठहर जाए, मतलब मीनिंग समझ में आ जाए, है ना? तो 4 कीवर्ड है यहाँ पे, रॉ, अनऑर्गेनाइज्ड, फैक्ट, प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल। अंडरलाइन करें ना कॉपी पे। It can be considered as facts and statistics collected together for
रेफरेंस और एनालिसिस। वाई, हम लोग जब भी कोई फैक्ट को कलेक्ट करते हैं या कुछ भी, जरूरी या जरूरी नहीं है, कोई भी चीजें हम लोग कलेक्ट करते हैं, पेपर्स जो हम लोग के, सपोज हम लोग कभी अपना घर साफ करने बैठे, तो बैग में से बहुत सारे ढेर सारे पेपर निकल रहे हैं। तो पेपर मैंने कभी ना कभी तो लिया था कि चलो ये काम आ जा सकता है कभी भी। जैसे इंडियन हाउस होल्ड में होता है, ये तो मैक्सिमम टाइम होता है कि हम लोग की मम्मियाँ बेसिकली हर कुछ रख देती हैं। फॉर व्हाट? फॉर कीपिंग, मतलब कीपिंग अ स्टोर, कि मेरे पास सब कुछ रहे, अगर जरूरत होगा तो यूज करेंगे, अगर जरूरत होगा तो यूज करेंगे। तो ऐसे करते करते क्या होगा ना, हम लोग बहुत कुछ जमा कर देते हैं। तो वो जो जमा करना होता है उसे कहते हैं डेटा। एंड जब वो काम आ जाए, जब वो समझ में आ जाए, जब वो काम लगने लगे, तो मीनिंग ठहर जाए उसका, तो कहते हैं कि हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। डेटा में क्या क्या होता है? नंबर्स हो सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, एनी सिंबल हो सकता है, कुछ भी। ऑल दिस इज कंसिडर्ड एज डेटा। बट व्हाट इज इंफॉर्मेशन? ये एक स्ट्रक्चर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और प्रोसेस्ड डेटा है। इसको हम लोग बेसिकली टेक्स्ट में भी, टेक्स्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसका ऑब्वियसली एक मीनिंग है, इसका कॉन्टेक्स्ट है, रिलेटिवनेस है, इसका रिलेटिविटी है, और ये रेलेवेंट है, हेल्पफुल है टू वन हु डिजायर्स वन। तो कीवर्ड अनलाइन कर देती हूँ। स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, प्रोसेस्ड डेटा है, एंड इसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। ऑब्वियसली ये रेलेवेंट है और हेल्पफुल है टू वन हु डिजायर्स फॉर इट। यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड है, 3 4 5 6 कीवर्ड है, बट 2 ही मार्क्स का आएगा अगर आएगा तो। स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, प्रोसेस्ड डेटा, एक कॉन्टेक्स्ट है, साथ ही साथ वो रेलेवेंट है टू होम, फॉर हेल्पफुल ऑफ पीपल हु डिजायर फॉर इट। नाउ मूविंग ऑन टू डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। आपको पता है स्टूडेंट्स कि आपका तो एमसीक्यू पेपर है नहीं, आप लोग बीकॉम देके आए हो, बट अभी मैंने किसी से बात नहीं करा। आई गेस नीलम मेरे साथ लास्ट टाइम थी, मैंने बस नीलम का ही नाम देखा ग्रुप में। अगर कोई होगा और तो मुझे याद नहीं है करेंटली, बट जैसा भी है, आई जस्ट वांट टू सी यू सम डेज इन द क्लास, ताकि आई कैन इंटरेक्ट विथ यू, आई कैन गाइड यू, as it is only few months are left for this semester to go off, and again the last semester for masters, and I hope you all are preparing। आप लोग कुछ ना कुछ के बारे में तो सोच रहे हो कि आगे क्या करना है, या फिर बहुत लोग शायद अभी भी काम कर रहे हो। तो अगर किसी को कुछ डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, इन कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू। नाउ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा आर वेरिएबल्स that help us to develop ideas and conclusions. We can just see and analyze and know what they're talking about. But information is not just fact, not just a statement, not just few words, but it is a meaningful data. इसका मीनिंग होता है, we can understand what the text or the context is trying to say. Okay. Now data are text and numerical values, and information is refined from actual data. डेटा कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबरिकल नंबर्स में हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, डिपेंड्स। एंड इंफॉर्मेशन इज रिफाइंड फॉर्म, मीन्स द फुल फॉर्म ऑफ इट। Like I am from the like previous generation of yours, so in that case, I am a millennial, but you are Gen Z, where you people use so many short forms. I don't even know. At times, I need to ask my students that what does this mean? What was IKR? First day I saw this, I was like, what is this IKR? Spelling mistake, or what is it? Then later, my student told me, "Ma'am, it's I know, right?" So I said, okay, that's how it works. And I am absolutely blank when I see this. So that is when I know IKR, but I don't know the meaning of it, is data. But IKR is clear to me as I know, right? In that case, that becomes an information. Another very, very important point where data does not rely on information. Information के ऊपर data depend नहीं करता, but इंफॉर्मेशन लेकिन पूरा पूरी डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। विदाउट डेटा इट कैन नॉट फंक्शन, विदाउट डेटा इट कैन नॉट फंक्शन दस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा फोकस करें कि डेटा को आप रिफाइंड रखें, एंड आप कोशिश करोगे कि वो डेटा को आप एरे में रखो, आप उसका इस्तेमाल कर पाओ, समझो कि क्या बोलना चाह रहा है।
बिट्स एंड बाइट्स आर द मीनिंग मेजरिंग यूनिट्स ऑफ डेटा। डेटा को हम लोग मेजर कर सकते हैं नॉट बाई किलोग्राम or decibels or any other measurement, but we use bits and bytes. Moving on, so information is measured in its meaningful units like time, quantity, because information is obviously a stated fact जिसका एक meaning होता है, जिसको हमको समझ में आता है, तो उसको हम measure करते हैं by time and quantity. Data can be easily structured as the following. Tabular data can be made, a graph can be made, or a data tree. Whatever you see basically is data, right? So जो भी दिखे आपको, एग्जांपल्स हो गए यहाँ पे तीन मेंशन किए हुए हैं. पहला है tabular data, graph, and third one is data tree. Whereas information can also be structured. कैसे? एक तो लैंग्वेज उसका अच्छा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए, प्रॉपर ग्रामर होना चाहिए, आइडियाज, अब वो थॉटफुल होना चाहिए, थोड़ा यूनिक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए. साथ ही साथ थॉट्स जो कि रैंडम होते हैं बहुत ज्यादा और बहुत ही मतलब दे डोंट कम इन द करेक्ट टाइम. जब भी आपको जरूरत नहीं होती है थॉट्स की तभी आते हैं. तो इन दैट केस ये भी एक प्रॉब्लम है आपको. यू शुड बी अवेयर and you should always have a pad and pen with you. So whenever you come across anything that crosses your mind, you just text. Now, so many more facilities are there in like Gen Z uses all this. But I use what if I at all forget and don't have a pen and paper in front of me, I just text myself on WhatsApp or I just text the other number that I have. So in that case, I have a clue of what and where I did things and how I did things or what I kept or where I kept like that. Understood? What is missing? So everything must be written and chalked out before. Now, data information, data does not have any specific purpose, and information obviously has carries a important meaning, and obviously it has a interpreting data. 1 minute. Hello. 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 Exactly. Exactly. So, yes, moving on to the next point where data does not have any specific purpose, they said, but information obviously has a meaning, has a purpose. And data, it is low level knowledge because you don't understand much out of it. You don't understand कि उसका meaning क्या है और उसको ultimately क्या है वो बात. Like that. 1 minute. हाँ.
Yes. So it is a low level knowledge data because it does not specify anything. उसका देख के मतलब समझ में नहीं आएगा आपको कि इसका मीनिंग क्या है, बट इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली आपको समझ आएगा कि बात क्या हो रहा है या फिर क्या बात है, आपको वो काम अल्टीमेटली आपको काम आएगा या नहीं आएगा, तो ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए इंफॉर्मेशन इज अ सेकेंड लेवल ऑफ नॉलेज, नॉट लो लेवल। एंड डेटा इट डज नॉट डायरेक्टली हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। आप डेटा देख के आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते या फिर किसी को गुड बैड नहीं बोल सकते, बट आप इंफॉर्मेशन देख के आप डिसीजन ले सकते हो, आप समझ सकते हो उसका मीनिंग क्या है नहीं है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट which itself have no meaning. Information puts those facts into context. डेटा देख के आपको कुछ समझ नहीं आएगा अल्टीमेटली, बट फैक्ट देख के आपको मतलब जो इन्फॉर्मेशन है जो अगर वो एरे में आ जाएंगी तो आपको सब समझ में आने लगेगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। In that case that is important. ठीक है। Now data is collection of facts which itself has no meaning. Oh, मैंने कहा अभी example of data is test score. अगर मैं बोलूँ कि 20 English 20 history 40 like that, okay, कोई मीनिंग आ रहा है। बट अगर मैं बोलूँ राहुल को मिला मैथ्स में 85, नाउ राहुल विच राहुल ऑफ क्लास 9, जस्ट लाइक दैट। अगर मैं ऐसा डिटेल में आपको बोलूंगी तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ आएगा कि बात हो क्या रहा है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन होता है थोड़ा सा हायर लेवल नॉलेज। मूविंग ऑन टू ई बिजनेस एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ई कॉमर्स। ई बिजनेस स्टूडेंट्स अगर पहले पहले तो दोनों टॉपिक पढ़ा है आपने, ई बिजनेस भी पढ़ा है या फिर ई कॉमर्स भी आपने पढ़ा है। तो ई बिजनेस इज अ कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन बिजनेस प्रोसेस ऑन द वेब एंड इंटरनेट में, जो भी मतलब इंटरनेट एक्सट्रानेट जहां पे भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ। सो दिस कस्टमर्स इंटरनल एंड मैनेजमेंट दोनों फोकस करते हैं बिजनेस प्रोसेसेस पे, इंक्लूडिंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो कस्टमर्स प्रोसेसिंग पेमेंट, managing production and supply chain, collaborating with business partners, sharing information and running the automated employee services and recruiting the employees. So in that case ये बहुत important है कि आपको पता चले कि सारे चीजें मतलब इन लाइन है, सप्लाई चेन और कोलैबोरेटिंग विद बिजनेस पार्टनर्स जो है वो करेक्टली चल रहा है, और सब हर एक लेवल का डेटा, हर एक लेवल का इंफॉर्मेशन आपको वापस मिलता रहे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि आप कनेक्टेड रहो हर एक टॉपिक के साथ। अगर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है आपके आसपास तो आप भी क्लूलेस रहोगे टू अ सर्टेन पॉइंट। तो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को क्लू रहे, हम लोग को पता रहे। दैट इज द रीजन ई बिजनेस इज यूज्ड व्हाई, बिकॉज ऑब्वियसली ई बिजनेस मतलब द वर्ड इटसेल्फ सेज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जो कि ऑनलाइन मीडियम में इंटरनेट और एक्सट्रानेट के माध्यम से होता है। बट यहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं यहाँ पे मतलब इंटरनल भी होते हैं एक्सटर्नल भी होते हैं, लेकिन ये आपको यहाँ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, नो पर्सनल टच, है ना। आपके सामने रहकर कोई अगर कोई चीज समझाएगा या फिर आपको सामने रख के अगर कोई चीज आपके हाथ में देके वो बोलेगा आप इस्तेमाल करके देखो या फिर आप छू के देखो या समझ के देखो, तो उसमें एक अलग सा फीलिंग है, आपको रिलायंस थोड़ी ज्यादा मिलती है। बट रिलेटिवली मैं अगर बोलूँ कि इन दैट केस मतलब ऑनलाइन थोड़ा सा मतलब तो ये रहता है, प्रॉब्लम रहता है, वी कैन नॉट ट्रस्ट कि कैसा आएगा नहीं आएगा, बट एक मतलब तो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम विश्वास आ जाता है और आस्ते आस्ते आप भी सीख जाओगे। पहले टाइम में सबको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट आस्ते आस्ते एवरीवन गोज थ्रू इट, है ना। अब व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। यहाँ पे हम लोग बेसिकली गुड्स को सर्विसेज को ट्रेड करते हैं ओवर द इंटरनेट। एंड ये बस्लिंग सिटीज लाइक बेसिकली मेट्रोपॉलिटन्स में ज्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक्स थोड़े फास्ट होते हैं रिलेटिवली, और यहाँ पे ट्रांसलेटेड इनटू zeros and ones on the internet super highway, an estimated 2.14 billion people worldwide to buy goods and services online nowadays। आप लोगों को पता होगा ड्यू टू अर्बन कंपनी घर के छोटे मोटे काम जो पहले प्लम्बर या हम लोग बुलाते थे किसी को, वेट करना पड़ता था कि कब वो लोग फ्री होंगे कब आएंगे, अभी बस वन टैप दूरी पे है, आप कोई भी सर्विसेज घर बैठे बुक कर सकते हो एंड वो लोग तुरंत घंटे भर में आ जाएंगे। ऐसा क्या, लैब टेस्ट एंड ऑल दिस ऑल्सो। अगर घर में बीमार कोई है, यू डोंट वांट टू गो आउट, उनको लेके थोड़ा मतलब परेशानी है, एवरीथिंग आप बस वन टैप दूर पे, दवाई कुछ भी, आजकल तो इतना इजी हो गया है लाइफ
सो इन दैट केस अमेजोन में शॉपिंग करना, प्राइम कुछ भी, मतलब इफ यू आर अ प्राइम कस्टमर, तो 1 डे डिलीवरी भी अवेलेबल है आपके लिए, और डिलीवरी चार्जेस भी ऑफ है। तो इतने सारे फैसिलिटीज अगर किसी को मिले, साथ साथ सुपर हाई डिस्काउंट्स, तो हम लोग क्यों ना अवेल करें, है ना। आप, हम सब कोई इंटरेस्टेड है अभी ऑनलाइन शॉपिंग में, है ना। मुझे तो लगता है आपने सारे कोई पूजा का शॉपिंग ऑनलाइन ही किया है। ऐसे तो आप लोग हो नहीं मेरे सामने, तो बात नहीं कर सकती मैं, बट आप लोग क्लास में रहोगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा फील होगा कि आप लोग हो, बात करो, कनेक्ट कर पाऊंगी मैं आप लोगों के साथ, और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा बातें भी कर पाएंगे। वन मोनोटोनस पढ़ाई नहीं होगा, थोड़ा मतलब वी कैन जस्ट इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, और वी कैन जस्ट टॉक एंड डू सम एक्टिविटीज, है ना। ई कॉमर्स इज वन वे पीपल बाय एंड सेल थिंग्स इन रिटेल। ऐसा एक मतलब जैसे आपको पता चलेगा कि आजकल देखना बहुत सारे हाउस वाइफ्स जो हैं, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन मतलब बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग क्लोथ्स, और मतलब दे वांट टू डू ज्वेलरी बिजनेस, एनीथिंग आप जो भी बोलो। आजकल बहुत बहुत सारे वुमेन दे आर मतलब enthusiastic टू डू न्यू वर्क, चाहे उनकी पहचान बने, चाहे उनका जो है उनका रिकग्निशन हो मार्केट में। हर कोई चाहता है कि उनका एक पहचान बने। तो अभी सब कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, आप लोग भी, मैं आशा करती हूँ कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होगे, क्योंकि मास्टर्स कर रहे हो तो आप लोग थोड़ा सा प्लान करके रखे हो सब कुछ। आस्ते आस्ते आप लोग भी जो है ना, आप लोग भी सेटल हो जाओगे, अभी बस 1 और साल लगेगा आपको बस ना। सम कंपनी सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ओनली, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो खाली ऑनलाइन बिकते हैं, वो लोग कोई भी बाहर मतलब रिटेल में आपको बहुत कम मिलेगा। एंड इंक्लूड्स फिजिकल स्टोर्स, अभी होगा तो उसका मतलब डीकैथलॉन, यू गेट ऑनलाइन, बट डीकैथलॉन के चीजें अभी आई गेस मिंत्रा एंड अमेजोन में अवेलेबल है, बट पहले डीकैथलॉन यूज्ड टू बी द ओनली सोल सेलर, है ना। So startups, small business, large companies, they sell their products at scale, मतलब large scale obviously, and reach customers across the world. Now, difference between e-commerce and e-business. E-business refers to performing online commercial activities, transactions over the internet, whereas e-business refers to performing all types of businesses, all types of business activities, not only e-business, e-commerce, but also every type of all online business activities basically, which uses internet, again through internet. Both needs internet, very very crucial. Even if it may sound silly मैम, obviously ये मतलब तो इलेक्ट्रॉनिक होगा या फिर इंटरनेट का यूज होगा, बट यू नीड टू राइट इट टू मेक इट मोर विजिबल। ओके, these are the points जहाँ पे आपको मतलब जहाँ पे आपको मौका मिलेगा पॉइंट स्कोर करने का। मूविंग ऑन, तो ई कॉमर्स इज अ वेरी वेरी नैरो कॉन्सेप्ट, एंड ये कंसिडर करता है सबसेट ऑफ ई बिजनेस को। और ई बिजनेस इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा है ऑब्वियसली ई कॉमर्स से, क्योंकि ई कॉमर्स बट सेलिंग एंड बाइंग में फोकस करता है, वेयर ई बिजनेस इज टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, सारे चीजों को मिला के, सारे बिजनेस को मिला के। Commercial transactions are carried out in e-commerce, but business transactions are carried out in e-business. ये थोड़े पॉइंट आपको मतलब एक कीवर्ड है तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा हो गया, कमर्शियल transactions are carried out, यहाँ पे business transactions are carried out in e-commerce। ट्रांजैक्शंस आर लिमिटेड, आप बहुत कम मतलब ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते, पर डे लिमिट हो जाता है। बट ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर नॉट लिमिटेड, आप सारा जिंदगी करो, जब मन करो, जितना बजे करो, कभी भी आपको पोर्टल खुला मिलेगा। अल्टीमेटली अगर बैंक का पोर्टल डाउन है तो कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ आपको सारे फैसिलिटीज का मौका तो मिलेगा ही। In e-commerce, transactions are limited. Sorry, I'm पढ़ा है. It includes activities like buying and selling of a product, making monetary transactions, etc. over internet. तो मैंने अभी कहा कि बाइंग, सेलिंग, पैसे भेजना, पैसा लेना, ये सारे चीजें होती हैं, एक्टिविटीज इंक्लूड करती हैं किसमें, ई कॉमर्स। Whereas in e-business, all the activities like procurement of raw material, goods, customer education, supply activity, buying, selling, जितने भी others काम होते हैं, वो यूजुअली क्या करते हैं, रिक्वायर्स अ यूज ऑफ ओनली अ वेबसाइट। यहाँ पे बस वेबसाइट का यूज होता है, वेराज इट रिक्वायर्स मल्टीपल वेबसाइट। किसको मल्टीपल वेबसाइट जरूरत होती है, ऑब्वियसली ई बिजनेस को, क्योंकि इसके बहुत सारे काम भी तो होते हैं ना।
जैसे मैंने कहा कि बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं, सो इन दैट केस इंपॉर्टेंट है कि उसके बहुत सारे वेबसाइट या पोर्टल उसको बहुत जरूरी भी है। एंड इसमें ई कॉमर्स में इन्वॉल्व होता है बेसिकली मैंडेटरी यूज ऑफ इंटरनेट, और यहाँ पे हम लोग इंटरनेट के साथ साथ इंट्रानेट या फिर हम लोग एक्सट्रानेट भी यूज कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स अप्रोप्रिएट है फॉर बिजनेस टू कस्टमर्स, मतलब ऑब्वियसली बी टू सी, वेराज ई बिजनेस में बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस भी पॉसिबल है, जैसे होलसेलर्स सेल टू होलसेल रिटेलर्स, राइट? दैट इन दैट केस ई कॉमर्स इज डिलीवरिंग टू बिजनेस एंड बिजनेस इज डिलीवरिंग टू बिजनेस अगेन। अगर आप कुछ खरीद रहे हो और वहां से मेरे को कुछ पसंद आ जाए, या फिर आप 100 आइटम्स लेके आए हो, तो मैंने आपके साथ शेयरिंग कर लिया करके मैंने भी 100 प्रोडक्ट्स ले लिया, तो आपको एक बर्डन कम हो गया। यू ऑल्सो गॉट अ इन्वेस्टर। हाँ, इन्वेस्टर अब साथ साथ आप बोलोगे मैम मेरा प्रॉफिट भी तो कम जा रहा है। हाँ, आप कुछ खो पाना होगा तो कुछ तो खोना होगा ना। वैसे e-commerce covers outward or external business processes, whereas the inward or the internal are covered by the e-business activities. Now, why is information important for decision making? कोई भी डिसीजन लेने के लिए कौन सी चीजें जरूरत होती है, उसमें इंफॉर्मेशन का रोल क्या है? इंफॉर्मेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंफॉर्मेशन का डिसीजन मेकिंग में, प्रोसेस में, एंड इट सर्व करता है द फाउंडेशन फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जैसे मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन मतलब या डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली पहले मतलब पहले वो समझा देती हूँ। हम लोग अगर कोई दुविधा में आ गए, कोई प्रॉब्लम में आ गए हैं, वी वांट अ सोल्यूशन, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे थोड़ा डिसीजन प्रॉपरली लेने के लिए। अगर डिसीजन लेना गलती हो जाएगा तो आगे देखना बहुत सारी चीजों में गलती होती रहती है ना? अगर आपने सोचा आपको आज एक मतलब आपको घर ऑफिस से जाना है या फिर आपको कॉलेज जाना है थ्रू मेट्रो, बट आप निकले घर से और देखा कि मेट्रो का कुछ तो हो गया है, मेट्रो अभी रिज्यूम होगा 2-3 घंटे बाद, और आपको कॉलेज बहुत दूर है, सो द फर्स्ट पॉइंट यू विल रिग्रेट द डिसीजन ऑफ गोइंग टू कॉलेज विथ मेट्रो। नाउ मूविंग ऑन to the information or the contributes, basically the attributes of decision making। पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। बेसिकली इंफॉर्मेशन हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स को, एंड अलाउ करता है डिसीजन टू मतलब डिसीजन मेकर्स को कि इवैल्यूएट करे, एनालिसिस करे, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखे एंड चूज करे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। Evidence based on decision making, information provides the evidence needed to be made for taking decisions। बेसिकली कुछ डिसीजन होते हैं जिसके लिए हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में जानना पड़ता है, एविडेंस चाहिए होता है, हम लोग को फैक्ट्स चाहिए होते हैं। हम लोग कोई भी डिसीजन बस नहीं दे सकते हैं, वी नीड टू हैव अ प्रॉपर आउटलुक ऑफ द होल सिनारियो। और रिस्क असेसमेंट, काफी ज्यादा रिस्क भी होता है कभी कभी डिसीजन लेना, मतलब अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, शाबाशी मिलेगी, अगर कहीं चूक गए, अगर कोई मिस्टेक हो गई, तब लेकिन पूरा ब्लेम आपको मिलेगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप डिसीजन को ऐसे लो ताकि शांत दिमाग से लो, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो। फोरकास्टिंग ये हेल्प करता है डिसीजन मतलब डिसीजन मेकर्स को एंटिसिपेट करने में फ्यूचर इवेंट्स के, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, है ना? इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, ऐसा मैंने कहा कि अगर हम लोग डिसीजंस करेक्टली लेना चालू कर देंगे तो हम लोग के सारे जो है ना मतलब प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने लगेंगे, हम लोग के जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक होने लगेंगे, हम लोग के प्रॉब्लम्स जो है थोड़े से बेटर होने लगेंगे पहले से, अगर हम लोग डिसीजंस करेक्टली लेना स्टार्ट कर दिए। एंड डेटा डिक्शनरी क्या होता है बेसिकली, इसमें दो वर्ड है, डेटा और डिक्शनरी। तो डेटा मतलब बताइए आपको, अभी मैंने अभी कहा कि रॉ अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स को हम लोग डेटा कहते हैं। सो सिंपली इसका मीनिंग तो होता है कलेक्टेड थ्रू समवन सम सोर्स, एंड डिक्शनरी इज बेसिकली a book of words। So in that case, a data dictionary can be defined. एक minute, just drink water।
Yes. So data dictionary is basically a book यहाँ पे these are less information and details provided by the data model. So जब भी हम लोग को कुछ भी इंफॉर्मेशन समझ में आता है या कुछ भी इंफॉर्मेशन डिटेल में समझना होता है प्रॉपर नॉलेज के साथ, तो हम लोग कंटेंट्स को यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखते हैं हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे डेटा को देख सकते हैं। जैसे सपोज मैंने कुछ भी देखा हो या आसपास जो भी पता लगे हम लोग उसको रजिस्टर करते हैं दिमाग में, समझते हैं बात को, लेकिन जब चाहिए होता है उसका यूज तो हम लोग उसी टाइम पे अपने दिमाग को रिकॉल करवा देते हैं, है ना। वैसे ही डिक्शनरी भी एक जगह एक मॉडल्स को फॉलो करके डिफरेंट डिफरेंट डेटा को स्टोर करता है एंड बेसिकली इसके सारे एंट्रीज और एंटिटीज जो है ये रिलेशनशिप्स एंड एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करता है। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द appropriate chart and how systems are classified based on its interaction and with environment. So today is the first class with you people students. So do let me know आपको समझ आ रहा है या नहीं, या फिर I need to explain a little more और मैम सही है, you want extra questions, जैसा भी है आप मेरे को कांटेक्ट करो, मेरे को बताओ, अदरवाइज आई नॉट बी एबल टू नो ना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इन दैट केस या फिर अगर पॉसिबल हो तो आप लोग कभी ऑनलाइन ज्वाइन भी करो so that I can just have a word with you people and know if you have any doubt and talk with you people as well. तो यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं बेसिक एनवायरमेंट सॉरी बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे, एनवायरनमेंट में। तो उसका एक डायग्राम यहाँ मेंशन करा हुआ है। यहाँ पे तीन बेसिस दिख रहे हैं हम लोग को, एक ग्रीन कलर, ब्लू कलर, एक येलो कलर। तो द येलो कलर इज वन जहाँ पे हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं, उसके नीचे हम लोग टैक्टिकल मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं, साथ साथ लास्ट में लोग ऑपरेशनल मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप दोनों एरोज देख सकते हो, बोथ आर रनिंग अपवर्ड डाउनवर्ड, मतलब दे आर स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। तो पहला जो पॉइंट्स जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जरूरी है वो देख सकते हैं हम लोग, डिसीजन स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और टैक्टिकल मैनेजमेंट में सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब अभी तैयार नहीं हुआ है, चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस टाइप का। देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एंड स्ट्रक्चर्ड मिलेगा आपको अगर आप ऑपरेशनल मूवमेंट में जाना चाहोगे, और साथ ही साथ आपको ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में पता चलेगा। अब ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल बेसिकली कंसर्न्स विद परफॉर्मिंग डे टू डे बिजनेस, घर का रोजमर्रा का काज काम करना, transactions of the organization, and examples of users at this level of management includes cashiers at a point of sale, bank tellers, nurses in a hospital, and customer care staff. तो आसपास आपको जो भी दिखे, जो वेल विशर्स जो बेसिकली हेल्प कर रहे हैं आपको, वो सारे क्या हो जाते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल में आ जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक स्टोर बेच रहा है चीजें क्रेडिट कार्ड में, क्रेडिट में, एंड दे हैव टू पे अ क्रेडिट पॉलिसी दैट हैज सम सेट लिमिट ऑफ द बोरोवर, मतलब बेसिकली एक लिमिट हो गया उसके कार्ड का और वो एक्सीड कर गया उसको, तो फिर सर्टेन अमाउंट के बाद वो अलाउ नहीं होगा उनको पेमेंट करने का ना, ऑल मतलब और भी पेमेंट डालने का कार्ड में, वो पॉसिबल नहीं होगा। आफ्टर द सेल, ऑल द सेल्स ऑफ द पर्सन needs to decide whether to give credit to a customer on basis of the current information that we have. कभी कभी क्या होता है, हम लोग को पता जो होता है, हम लोग को जो चीजें पता होती है वो इनफ नहीं होती है, तो वी नीड टू नो इन डिटेल। इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को पता चले कि जो भी इसको हम लोग क्रेडिट दे रहे हैं वो वर्थ इट है या नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्टिकल मैनेजमेंट लेवल।
टैक्टिकल विद द वर्ड इट्स समझ में आता है कि हम लोग कोई भी चीज को टैक्टिकली डील कर रहे हैं। मैनेजमेंट का होता है टू मैनेजमेंट विद टैक्टिक्स टू नो हाउ और व्हाट इज सुटेबल फॉर होम। जैसे अभी आपने कुछ बदमाशी की है तो आपकी मम्मी को पता होगा कि आपको ऐसे ठीक करना होता है ना। सो शी वुड हैव अ क्लू। सो इन दैट केस उनको पता है, उनका टैक्टिक्स है वो। अब टैक्टिकल मैनेजमेंट लेवल क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है जहाँ पे डोमिनेट करता है मिडिल लेवल मैनेजर्स को और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइजर्स द यूजर एट दिस लेवल ओवरसी द एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटीज है, कौन सा ऑपरेशनल मैनेजमेंट के साथ जो रिलेशन होता है उसके साथ। एंड द टैक्टिकल यूजर्स मेक सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस and the decisions are partly based on set guidelines and judgmental calls. As example, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग tactical manager can check the credit limit and payment history of the customer. वो देख सकते हैं कि वो टाइम पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है कि नहीं ऐसा। And if they identify a payment history that benefits the organization and an allowed increased percentage, the strategic management level, this is the most senior level in an organization, and the user at this level makes unstructured decisions सीनियर लेवल मैनेजर्स के साथ ऑब्वियसली, एंड दे हैव अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसा। बेसिक constituent elements of a system existing in an environment, various elements कौन से हो गए? आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसर, कंट्रोल, environment and feedback, also boundaries and interface. So outputs कैसे कैसे हो जाते हैं? May be capable of producing an output, और उसका जो काम ही होगा तो produce an output, उसका मेन फंक्शन होगा कि आउटपुट क्लियरली दे वो, एंड वो ऑब्वियसली वैल्यू फुल हो, वैल्यूएबल हो टू द यूजर। अगर ऐसा आउटपुट जो काम ही ना आए तो फिर क्या ही फायदा। वट एवर be the nature of the output, goods हो, services हो, information हो, accordance to the line होना चाहिए, with the user expectations होने चाहिए उसके, और अगर आउटकम हो रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए। Inputs are the elements that enter the system for processing. Essentially क्या क्या है यहाँ पे? Accuracy होना चाहिए उसमें, proper format follow करना चाहिए, timeliners मिलने चाहिए उसको, economical होना चाहिए, खर्चे भी थोड़ा कमाना है कि नहीं। प्रोसेसर इज द ऑपरेशनल कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम, और इसका मेन काम ही होता है प्रोग्राम्स को सेट करना इन सच अ वे ताकि डेटा इज प्रोसेस थ्रू द कंप्यूटर। फिर कंट्रोल पे आते हैं, द एलिमेंट इज नीडेड all the activities governing concerning input and processing producing the output. The system is always guided by control. इसको कंट्रोल किया जाता है करेक्टली ताकि वो एक्सीड ना करे। एंड also the example that we can see here for decision making body regarding this particular step control is the inflow, handling and the outflow. Hence ये जो सारे सिस्टम हम लोग देख सकते हैं ऑपरेट करता है विद इन टॉलरेबल परफॉर्मेंस लेवल्स। An example is the slight deviation in the normal human body temperature, imbalance in health condition if it comes for a long time or long way, bad health को affect कर सकता है, and ultimately death और endless भी हो सकता है। Environment refers to the external elements that affect the system or determine करते हैं how a system must function. For the example of the environment consisting of vendors, competitors and others may influence the actual performance of a business system. साथ ही साथ इसके capable enough होना important है adjust करना with the environment. It should change according to the changing environment. अब जमाना बदल रहा है और अगर आप ना बदलो तो फिर कैसे होगा, है ना। तो चीजें को अकॉर्डिंगली करना चाहिए। फीडबैक आपको मिलता रहेगा, कंपेयर करोगे आप रिजल्ट्स को स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन के साथ, एंड कंट्रोल करोगे अपने एलिमेंट्स को अबाउट द डिफरेंस इज टर्म्ड एज फीडबैक। अगर हम लोगों को कुछ बताना है किसी को या फिर हम लोगों को रिप्लाई देना है, we will use the term feedback, we will use to give them a feedback of what happens or what is happening ultimately. Now moving on to the boundaries and interface. The limits of a system are specified by its boundaries. Limits हम लोगों को कैसे पता चलती है? उसके boundaries से। And in that case ये observe होता है
फीडबैक हम लोग, सॉरी फीडबैक नहीं, मतलब बेसिकली हम लोग बाउंड्रीज और इंटरफेस को देखते हैं और उसके एलिमेंट्स को देखते हैं, जो इसका मेन होता है कि इसका मतलब ये एलिमेंट्स को एलिमिनेट ना करें एंड ऑब्वियसली इसको फंक्शन करने में हेल्प करें, एंड आइडेंटिफाई करें इसका कंपोनेंट क्या है, प्रोसेस क्या है, इंटर रिलेशनशिप्स ऑल्सो एंड इंटरफेसेस विद द other systems. How does information technology has an impact on the functional unit of an organization as a whole? So in that case, information technology uses the computer systems or devices to access the informations, and information technology is responsible for such large portion of our workforce. और ये सारी चीजें इसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, एंड बिकॉज बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं पर्सनल एक्सेस को लेके, सो इन दैट केस हाउ मच आवर डेली एक्टिविटीज कितना मैटर कर रहा है, वेदर वी आर स्टोरिंग, रिट्रीविंग, एक्सेसिंग द एंड मैनिपुलेटिंग द इंफॉर्मेशन, क्या हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन लेके कुछ भी कर रहे हैं, क्या इतना इस्तेमाल हो रहा है, किधर कितना परसेंटेज यूज हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब हम लोग इसको मतलब आईटी को यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, इसका ग्रेट इम्पैक्ट होता है हम लोग के चारों ओर जो भी हो रहा है पता चलता है। वी आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, वी आर ऑलवेज getting updated with the new technology that is coming every day, and especially AI nowadays, कोई भी चीजों के लिए ये लोग AI यूज कर रहे हैं, and they have also recently showed us that बारिश करना भी through AI is possible now, जो पहले नहीं था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि बारिश करवाना होगा तो हम लोग एआई यूज करके क्लाउड बर्स्ट करेंगे, बट अभी तो वो भी पॉसिबल है। तो लाइफ इज चेंजिंग, है ना। वे स्टूडेंट्स होल टाइम वी वर मतलब हम लोग जो सोचते थे ऐसा लाइफ नहीं रहा, अभी लाइफ बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, हम लोग को भी इतना कुछ पता चल गया है, हम लोग भी इतना अपडेटेड हो चुके हैं। पहले के जमाने में आप सोचोगे तो इतना था ही नहीं, मतलब बेसिकली बहुत पहले की बात अगर हम लोग कह रहे हैं तो हम लोग को पता भी नहीं था कि अगर हम लोग आज के जमाने में बैठे हुए हैं, हम लोग इतना सारा काम थ्रू कंप्यूटर, थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया कर सकते हैं। बट अभी देखो सब कुछ पॉसिबल है ना। हर एक प्लेटफॉर्म को वेल यूटिलाइज कर रहे हैं आज के जनरेशन, एंड हाँ दे आर डूइंग गुड। नाउ यहाँ पे मूविंग ऑन टू द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि इट इज यूज्ड बाय एवरीवन from the enterprise companies and also the way down to one person business, local operation, global companies इसको यूज करते हैं, मैनेज करते हैं डेटा को और इनोवेट करते हैं इसका प्रोसेस, और एवरी फ्ली market sellers basically people who are the hawkers I can consider, so they have a smartphone, they use smartphone, they use credit cards to collect payments. Last day I went to this Jhalmuri wala had a Paytm box in front of him. He was very, very old. I asked him that how do you manage or how do you understand if someone has paid you or not? Someone might just do fraud with you. Someone might not give you the money and show you that it is gone. Nowadays, all these happens. In that case, you will be trapped. He just said that if he is not huh. So in that case, we need to resume back to what we were doing. Also, the impact of information collection system, the how to collect the payments, how the operational efficiency, and how IT supports the business functions helps drive productivity, and much of what we do in our personal and professional lives. In the foundation of our communication technologies, advancement, innovation, and sustainability, recreation, we use information technology to upgrade or communicate with others, play games, share media. बहुत important होता है हम लोग को पता करना कि आसपास क्या हो रहा नहीं हो रहा है। एआई के थ्रू आजकल आप खेल सकते हो, घर से निकलने का भी जरूरत नहीं है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो विद लॉट ऑफ पीपल। तो ये सारी चीजें आजकल पॉसिबल है जो पहले कभी सोचा भी नहीं था हम लोगों ने। साथ कुछ शॉपिंग करना, हेल्थ केयर, फूड सर्विसेज, सेल्स को लेके चलना, एवरीथिंग has become so easy. Right? Information technology has gained popularity in past few years because it has become an integral part of the organization, and the reason behind is not mystery because we all know how important IT has become in our life, and the sector is attracted to a lot of people that notice change. It has drastically changed a lot.
we'll have one more point to cover the chapter. Now, define the computer-based information system, basically CBIS. An information system is computer-based, means that the computer plays an important role in an information system, and also ये important system जो होते हैं computer-based information system, basically CBIS, users को collect करने में means computer to collect, process, store, analyze, and distribute the formative of the information फॉर स्पेसिफिक पर्पस. सारी चीजें करने में कौन हेल्प करता है? कंप्यूटर. Again, the term hardware to machinery, the category that includes the computer itself, often referred to as a central processing unit, CPU, and it supports equipments among the support system, the input-output devices, the storage devices, communication. हर एक चीज important होती है when we are doing it, and also the software that we are using. आजकल तो everything is available, piracy भी बहुत ज्यादा है market में, तो कुछ भी चाहिए आपको, आपको बस जाके ढूंढना है online and you will get it. सारी चीजें इतना आसान हो गई है, एंड मेनी पीपल आर गेटिंग द हेल्प आउट ऑफ इट, है ना. तो अभी देखो हम लोग कोई भी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी चीज का मीनिंग जानना चाहते हैं, कुछ भी हम लोग को बस रेसिपी ही जानना है कोई खाने का, बस वी नीड टू गो टू यूट्यूब, आस्क फॉर इट और दे विल गिव अस, है ना. सो देखो इतना अपडेट हो गया है थिंग्स. लाइक सॉफ्टवेयर के बारे में बोलूँ तो अभी मैं कुछ देर पहले, अगर आप लोग मेरे सामने हो तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को. अभी यस्टरडे सॉ रील जहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आप सीरी को बोलो हे सीरी लूमर्स, तो वो लाइट जला देगा फोन का. हे सीरी नॉक्स बोलोगे तो बेसिकली वो लाइट ऑफ कर देगा. हे सीरी एक्सीओ, जो भी ऐप खोलना है आपको, आप बोलोगे उसको तो वो खोल देगा. सो ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर, मतलब लास्ट डे बस देख रही थी कि पॉसिबल है कि नहीं, बट जी हाँ पॉसिबल है. हम लोग को पता ही नहीं चलता है इसके बारे में. अगर हम लोग ये ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर ये बिजनेस है, ई मार्केटिंग में नहीं बोल सकते इसको, बेसिकली आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं अगर रहते तो आपको पता भी नहीं चलता इस सारी चीजों के बारे में. तो हर एक चीज से कनेक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं, आई वुडंट से कि मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल के पास मत जाओ, एकदम एलिमिनेट हो जाओ, तो पॉसिबल नहीं है, एकदम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आजकल के जमाने में, तो एकदम पॉसिबल नहीं है. सो इन दैट केस इंपॉर्टेंट है कि आप कनेक्टेड रहो, आप अवेयर रहो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और साथ ही साथ आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का भी ज्ञान हो. आपको पता होना चाहिए कब मैं स्टॉप करना चाहिए, कब मुझे फिर चालू करना चाहिए. तो इस तरह चीजों का भी नॉलेज आपको होना चाहिए. डेटा एक फैक्ट है जिसको प्रोग्राम हम लोग करते हैं, बेसिकली यूजफुल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं. प्रोग्राम डेटा जनरली मशीन रीडेबल फॉर्म्स ऑन डिस्क टेप अंडर द कंप्यूटर्स नीडेड. तो डेटा हम लोग तभी प्रोसेस करते हैं जब उसको जरूरी होता है, जब जरूरी होता है तभी प्रोसेस करते हैं डेटा को. एंड प्रोसेस क्या है, बेसिकली प्रोसीजर क्या है इसको करने का, पॉलिसीज के बारे में जानना, ऑब्वियसली ऑपरेशन ऑफ अ गवर्नमेंट और मतलब बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम. बेसिकली प्रोसीजर्स आर पीपल, what software is to do with hardware. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन प्रोसीजर करेक्टली आप फॉलो नहीं करोगे तो आप करने जा रहे थे कुछ, हो जाएगा कुछ और. इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रोसीजर को फॉलो करो. एंड पीपल अगेन, विदाउट पीपल सारे चीजें ही बेकार है. तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है पीपल क्या, क्योंकि वी अल्टीमेटली वी विल बी यूजिंग इट, राइट. मोस्ट क्रूशियल पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो अभी 10:20 हो गया है स्टूडेंट्स, एंड आई कंप्लीटेड द चैप्टर इन 1 hour. I'll just give questions. Just 5 minutes for you to revise. As you'll be seeing the recording, so I'll just give you the 5 minutes. Next 5 minutes, just revise. देख लो फटाफट कि कोई भी डाउट है किधर. Then I will just if you have doubt, you text me on WhatsApp. मैं दे रही हूँ आपको टाइम, बस टाइम को देख लो. And then I will see the questions of all this chapter, and then we'll move next chapter.
I hope by this time people have had a quick revision. So यहाँ पे कुछ तो क्वेश्चन, यहाँ पे 8 क्वेश्चन मेंशन है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं है वो मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी आपको, तो वो पहले नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, जो यहाँ पे नहीं है, आपको पढ़ के एसेस करना पड़ेगा। सो आई गिव यू क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट, ताकि आप यू कैन यूज योर क्विक विटेड नॉलेज टू एनालाइज, टू नो एंड टू अंडरस्टैंड बेटर। अगर आप थोड़ा सा मतलब खुद से बनाने की कोशिश करोगे ना, इंपॉर्टेंट होगा, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो हाउ यू फ्रेम योर आंसर्स, सो आई जस्ट गिव यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टाइम। पहला है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। Okay, written by this time. Next is, bring out any two similarities and dissimilarities which are not mentioned here. Obviously, यहाँ पे difference mention किया हुआ है, but mention any two similarities and dissimilarities between e-commerce and e-business. Obviously, आंसर आपको गूगल से नहीं देखना है स्टूडेंट्स, ये मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है कि आप खुद से बनाना सीखो, आपको पता चले कि क्या है, so important है। ओके, two similarities and dissimilarities between e-commerce and e-business. Next would be, how does risk assessment act as a importance for decision making? How does risk assessment act as importance for decision making? What are the objectives of data dictionary? What are the objectives of data dictionary? Bring out any two similarities between strategic, tactical, and operational management. Bring two similarities, bring out two similarities between strategic management, tactical management, and operational management. Explain the elements of a system existing in an environment. Mention the elements of a system. Mention the
in an environment mention any 5 uses of information technology. Mention any 5 uses of information technology. Mention the components of CBIS. Mention the components of CBIS. I guess that's all. So I guess we can start the next chapter. How many points are there? Quite a lot, it seems. Twenty. So let's do one thing. I'll just keep it till here today. Next class, when we again start, we'll start with chapter number 2. So that you can also process, understand. If you have any doubt, let me know. Okay, students. Bye bye. See you again the next day, I guess, which is on Monday. So if you have any doubt, let me know, students.